Tribute paid at the World Heritage Mahabodhi Temple to the young Tibetan man who self-immolated before the UN in the US. Tibetan community in Bodhgaya appeals to India for support regarding Tibet's freedom. Bodhgaya. A tribute was paid by a Tibetan noon, in front of the World Heritage Mahabodhi Temple, to Lobga Rangzin, the young Tibetan man who sacrificed his life by self-immolating before the United Nations in the United States for the cause of Tibet's freedom. A large number of local residents were also present on the occasion. Members of the Tibetan community residing in Bodhgaya appealed to the Government of India for moral support and cooperation in their quest for Tibet's independence. They stated that Tibet has been under Chinese control for nearly 70 years, during which time the Tibetan people have continuously faced hardships and oppression. They noted that many individuals have made sacrifices to protect their country and culture. Representatives of the Tibetan community remarked that India has always provided them with refuge, respect, and the opportunity to lead a peaceful life, for which they expressed their gratitude to the Indian government and the people of India. They stated that while they live in peace and brotherhood in India, the hope for the freedom of their homeland, Tibet, remains alive in their hearts. During the event, local social activist Ramji Manji mentioned that the recent incident of a young Tibetan man self-immolating in the US in support of Tibet has drawn global attention to the issue. He stated that the Tibetan community believes the international community should step forward to ensure the protection of human rights and the establishment of peace in Tibet. Members of the Tibetan community further added that the establishment of lasting peace in Tibet would have a positive impact on India's security and the stability of the entire Himalayan region. They urged the Government of India to play a role in supporting the democratic aspirations and human rights of the Tibetan people. Amidst this, Tibetan women tearfully expressed their wish that Tibet might gain its freedom during the lifetime of His Holiness the Dalai Lama. They also voiced their hope that, even if they themselves do not live to see it, their children might at least breathe the air of a free Tibet. Gayang, a Tibetan nun who paid her respects, has been living for several years in Bodhgaya, the site of Lord Buddha's enlightenment. Here, she cares for children from underprivileged communities. Additionally, she feeds hundreds of local street dogs daily and provides medical treatment to sick dogs. मेरा नाम है गयंग। कहाँ से हैं आप? तिब्बत। किस लिए यहाँ पर पोस्टर लेके खड़ा है? हमारे देश के लिए। क्या हुआ है? लोग रामजी के लिए। हमारे देश 70 साल से हमारे देश चाइना ने खा लिया है। अभी तक हम लोग उधर उधर फटा के घूम रहा है, लेकिन हम लोग को शांति से पूजा पाठ करके शांति तले लामा जी का हुक्म है कि शांति से रहना है, शांति से जीना है, शांति से दूसरों की मदद करके दूसरों के बारे में सोच के रहना है, बोलता है। समझाता हूँ तले लामा जी ने हमेशा तले लामा जी ने हमेशा ऐसे बोलता है। लेकिन अभी इस 15 दिन से हो गया है, लोग रांती बोल के हमारे देश लिए बलिदान दे दिया है। इन्होंने हमारे देश के लिए बलिदान दे दिया है। हमारे देश आज़ादी चाहिए बोल के बलिदान दे दिया। हम तो बर्दाश्त नहीं हो रहा, हमको दिन रात पर रोते रहता है, हमारे दिल में दर्द हो रहा है। हमको मर जाएगा क्या होगा मालूम नहीं होता है। हम नाने हैं, अभी तक 200 कुत्ता को बोधगया में खाना खाता है। गरीब बच्चा लोग को ये सबको लिए मदद करता हूँ मैं, कहीं जाके पैसा काटे करके थोड़ा करके करता हूँ तले लामा जी को हुक्म के बात को सुन के मान के। लेकिन हमको इस बात हमको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हमको बहुत दर्द होता है, रात को नींद नहीं आता है, दिन को खाना खाने की इच्छा नहीं होता है। ये आदमी ने बलिदान दे दिया है हमारे देश के लिए, इसलिए मैं अभी थोड़ा सा छोटा सा ऐसे ही करा हूँ। ये सबको सुनिए, खास करके इंडिया आदमी ने भाई बहन लोग सबको हम लोग तिब्बती लोगों के लिए मदद चाहिए। क्या चाहते हैं आप? हमारा देश आज़ाद चाहिए। हमारा देश इंडिया मदद करेगा तो ज़्यादा पावरफुल होगा। इंडिया ने जरूर मदद चाहिए हमको। आप कब से बोधगया रह रहे हैं?
मैं यहाँ 8 साल से रह रहा हूँ। दूसरों से कुत्ता को ये सबको काम कर दे रात पर तले लमजे के लिए, तले लमजे लूँ लेबू के लिए, तले लमजे के लिए। हमारा हम टिबेटी हूँ, टिबेटी। मेरे को खून टिबेट है, मेरे को हड्डी टिबेट है, मेरे को सांस टिबेट है, टिबेट हूँ मैं। हमको आज़ाद दीजिए, हम लोग देश को खा लिया। कौन खा लिया? चाइना ने। अभी उधर नहीं, हमारे भाषा बोल नहीं सकता है, हमारे कुछ काम नहीं कर सकता है। हम लोग को इसको भाषा में बोलना, नया कानून आया है, इसलिए नहीं ये आदमी ने बलिदान दिया है। ये आदमी ने लोग ने बलिदान दे दिया, लोग ये आदमी ने बलिदान दे दिया है यूएस में। क्या नाम बताया आप अपना? गया नमो। ठीक।